Good afternoon, everyone. This is Dr. Ayesha.butalia. I welcome you all for today's session on the various process models like incremental, spiral, agile, iterative. Okay, we have already covered the software development life cycle, whose phases include your requirement analysis and gathering, design, implementation or coding, testing, deployment, and maintenance. We have a lot of lectures conducted on software engineering project management, where in every lecture, this SDLC, okay, SDLC is software development life cycle. यहाँ पे this is a very useful website I'm sharing with to you. I'll share the link in the description box and the chat box also. तो यहाँ पे अगर आप link में जाएंगे तो left में SDLC है, so you can go through these life cycles. Okay, we have discussed this in detail, but then also, if suppose you are giving an examination or a test, so you can prepare your notes from over here where each phase has been defined properly. And we have also covered waterfall model in detail, okay, the V model in detail, the prototype model in detail, of course, in brief about the RAD and incremental also. So we will just have a quick recap with incremental and RAD, and let's go to the agile and spiral model for the today's session. So in incremental model, okay, this was the V model, which we discussed in our previous recording. In incremental model, basically the whole requirement is divided into parts. नाम से ही समझ में आता है इंक्रीमेंट, ओके, तो इंक्रीमेंट्स में चीजें हो रही हैं, ओके, तो द होल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बिल्ड्स एंड मल्टीपल डेवलपमेंट साइकिल्स टेक प्लेस हियर. दैट्स एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज मल्टी वाटरफॉल साइकिल. ठीक है, साइकिल्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, मोर इजीली मैनेज्ड. Increment model is a type of software development model, of course, like V model and agile model. So ये software development model है. एक process development model होता है और एक software development model होता है. तो जो incremental model है वो software model में आता है. Even V model and agile model ये software में आता है. Waterfall जो है वो process model में आता है. Okay, so why it is called multi waterfall model? क्योंकि बहुत सारे waterfall models जो है वो increments में होंगे. Okay, so increment करने से you can have multitasking. आप एक time पे different modules आप integrate बना सकते हो, because every waterfall model in your increment model can be developed independently. Okay, so it's a more type of distributed system approach. On my YouTube channel, there is a lecture on what is the difference between centralized, distributed, and parallel. So if you have interest in going into detail, okay, about the incremental model, I would recommend please go and watch that recording. I'll share you the link in the description box as well. So basically, incremental model, it uses a distributed approach where you have different models running in parallel, okay, and in increments rather. So in this model, each model passes through the requirement, design, implementation and testing phase. इसलिए मल्टी वाटरफॉल मॉडल है, क्योंकि हर वाटरफॉल मॉडल में ये तो रहता ही है. ओके, सो साइमल्टेनियसली डिफरेंट मॉडल्स आर वर्किंग, तो उससे आपका जल्दी भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. ओके, एंड यू कैन इन्वॉल्व वेरियस एक्सपर्ट्स इन योर डिफरेंट increments, so everybody is not busy in your entire SDLC. So as a working version, okay, you have a software on early during the software life cycle. तो आपका जो मॉड्यूल है वो जल्दी तैयार हो जाएगा. So each subsequent release of the module adds function to the previous release. तो जो release is version 1, version 2, ऐसे भी जो टाइप के software developments होते हैं, so increment model would be the best software model to be used. So it is basically the first iterative model. Okay, क्योंकि ये life cycle जो है ये iteration के तरह होगी. Second जो iteration है, okay, so first iteration
is basically the application of the is ready and to the customer. So this is basically for the client side. Okay. Second iteration is ready for the integrated with the first model. So deployment phase जो हमारा होता है life cycle का. Third phase जो है वो the whole product is ready and integrated. Okay, so hence the product got ready step by step. So I'll again repeat the first module, वहां पे application जो है, it is ready. Okay, second में it is ready to integrate with the first module, and third it is ready for the entire product, only not the application, but even the DLLs, the deployment algorithms, that together is ready. So build 1, build 2, you can have various up to build n. So this is incremental life model. Requirements तो सबकी same ही रहेगी, लेकिन वो phase wise जाएगा. So what will be the advantage of such type of life cycle? It generates working software quickly, है ना, क्योंकि increments में आप उसको simultaneously people are working, तो they can integrate faster. तो अगर suppose इसको 1 महीना लगता है, इसको 1 महीना, इसको 1 महीना, तो simultaneously करेंगे तो आपको पूरा मॉड्यूल एक ही महीने, ये पूरा प्रोडक्ट एक ही महीने में बन जाएगा. लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल लीनियर मॉडल लोगे या लाइफ वाटरफॉल मॉडल लोगे तो 3 महीने लगेंगे, क्योंकि 1, 2 and 3 टोटल आपको 3 मंथ्स लगेंगे. तो इसलिए इंक्रीमेंट से वो जल्दी हो जाएगा. This is more flexible, less costly to change scope and requirements. Okay, because it is module specific. That is why. तो मॉड्यूलर अप्रोच में आपने देखा होगा कि अगर हम ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं, इट्स मोर फ्लेक्सिबल, राइट? सो सेम अप्रोच इज विद द केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल. It is easier to test and debug during the smaller iterations. So obviously, increments को debug करना ज़्यादा easy हो जाएगा. It is in this model, customer can, and why it is easy to debug also, क्योंकि मॉड्यूल वाइज अगर debug करेंगे तो easy रहेगा. पूरे प्रोडक्ट को जब अगर कुछ एरर निकला तो देन वो लोकेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. In this model, customer can respond to each build, lowers initial delivery cost. ठीक है, क्योंकि आप इंक्रीमेंट्स पे भी आप आपका प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हो. तो अगर सपोज आपके 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है और ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर है, तो आप 3 ईयर ना बोल के भी 1 ईयर बोल सकते हो, क्योंकि आप ये 1 ईयर का जब तक वो टेस्टिंग और ये सब चलेगा रिलीज, तब तक आपका दूसरा भी रेडी हो जाएगा. Easier to manage risk. Okay, why? Because it is an increment. तो obviously जितना वो मॉड्यूल वाइज होगा, जैसे क्लासेस होते हैं, अगर पूरा एक ही सी फाइल बनाई जिसमें 2000 कोड है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा. लेकिन वही हमने C++ यूज करके अगर 20 क्लासेस बनाई और अगर एक में एरर आया तो सिर्फ उसी क्लास को सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी के 19 क्लासेस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए रिस्क भी मॉड्यूलैरिटी से बढ़ जाता है. Disadvantage, obviously, good planning is required, needs a clear and complete definition, and how it has to be broken, and total cost is higher than the waterfall model. क्योंकि आपके 3 waterfall models हो रहे हैं, तो obviously आपके कोडर्स भी आपको डिफरेंट लेने हैं मॉड्यूल वाइज, तो थोड़ा सा आपका कॉस्ट बढ़ेगा. तो सही. Now the last but not the least, the most important, कि actually use कहाँ करना है increment model. So this model can be used when requirements of the complete system are clearly defined. ठीक है? Major requirements must be defined. Okay, there is a need to get the product to the market early, क्योंकि जल्दी बनाना है, तो this is the main requirement actually. Okay, a new technology is being used. क्यों टेक्नोलॉजी? क्योंकि अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो आपका पहले साल में आपने प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो एटलीस्ट आप सेकेंड फेज में उसको ला सकते हो. लेकिन अगर ये पूरा एक ही मॉड्यूल होता तो 3 साल के प्रोजेक्ट में अगर 1.5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आप नहीं यूज कर पाओगे. एटलीस्ट 1.5 साल में आप ये 1 साल का हो गया, ये आधा खत्म हो गया, तो एटलीस्ट थर्ड फेज में तो आप यूज कर सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी को. ओके, सो दैट इज वन थिंग. Then next is resources with needed skill are not available. Okay, क्योंकि expertise चाहिए आपको. And there's some high risk features and goals. ठीक है, तो इसमें थोड़े कई बार high risk इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीमेंट्स में करते करते आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना. आप इस पे डिपेंडेंट हो या इस पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली ये इस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. डिपेंडेंसी बढ़ने से कई बार हाई रिस्क पे वो
जा सकता है, मतलब यहाँ से आते आते उसको डिजास्टर हुआ तो यहाँ पे जाते वक्त फिर इट्स अ बिग रिस्क, सो दैट इज व्हाई. सो दिस इज मेजरली अबाउट इंक्रीमेंटल मॉडल. ऑलरेडी एक हमने प्रोसेस मॉडल्स के ऊपर ब्रीफली ये सारे मॉडल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ. इफ यू हैव मिस्ड दैट देन चेक आउट इवन दैट. नाउ वी हैव अ RAD model. This also we have done in brief earlier. So with a recap, it's a rapid application development. So it is of the type incremental model only, क्योंकि increment भी model हमें जल्दी करने के लिए यूज आता है ना. बट इन RAD मॉडल यहाँ पे of course इसमें भी parallelly रन हो रहा है. Clear? These developments are time boxed and they are assembled into working model. This can quickly give the customer something to see and provide feedback regarding the delivery and the requirements. Okay, so incremental model आपका यहाँ पे ऐसे करके था, लेकिन जो RAD मॉडल है वो लाइक अ लैडर है. ओके और इसमें पैरेलली हो रहा है, वहां पे पैरेलली नहीं हो रहा था, वहां पे एक पूरा मॉड्यूल टोटली इंडिपेंडेंटली हो रहा था, लेकिन दैट वाज मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच. मैं फिर से कहूंगी कि यू गो एंड चेक दैट वीडियो वेयर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल. तो इंक्रीमेंटल और RAD मॉडल में ये फर्क है कि इंक्रीमेंटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच यूज करता है और जो RAD मॉडल है वो पैरेलल यूज करता है. डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल में ये फर्क होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अल्टीमेटली एक ही टास्क के ऊपर सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यानी सब इंक्रीमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल में एवरी टास्क इज डन independently. Okay, just a little bit of short detail I'll tell you about distributed system. Okay, this we are using for your incremental model. तो इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है, फर्स्ट चीज. सेकंड, आपकी डिपेंडेंसी लेकिन ज्यादा रहती है क्योंकि ना दे आर इंटरलिंक्ड. शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी है तो ये लूजली टाइटली कपल्ड है, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी में ऑल सिस्टम हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, एंड इसमें आपका इट्स मोर फॉर मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी एनवायरनमेंट? हमारे मल्टी कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कंप्यूटर एनवायरनमेंट, मल्टी कंप्यूटर में आई go to that section also, है ना. So synchronization is required more. Okay, whereas your आपका जो पैरेलल सिस्टम्स है, दिस इज फॉर योर RAD मॉडल. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इज लेस, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी लेस है, मेमोरी भी अपनी उनकी खुद की है, ओन मेमोरी. देन टाइटली कपल्ड सिस्टम नहीं है, दिस इज सिंस ओन मेमोरी या लूजली कपल्ड सिस्टम, सो डिपेंडेंसी इज लेस, that is why dependency is less. Synchronization is also less क्योंकि dependency is less, and it is a multi-computer environment. Okay, now what is the difference between multi-processor and multi-computer? जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें हमारे पास है यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, ओके, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, रैम एंड रोम. एंड देन वी हैव कंट्रोलर यूनिट, then we have ALU, right?
एंड वी हैव यहाँ पे इनपुट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर इनपुट एंड बेसिकली दिस इज योर सीपीयू. This entire three things, they together belong to your CPU. Okay, primary memory, control unit and ALU, and then you also have output. So the concept is that this is your processor, whereas this entire thing is your computer. So multiprocessor mein you can have multiple processors, but you will have a shared memory because input and output is the same. So you're working on the same task, that is distributed system. Whereas in parallel computing, you will have a multi-computer, means you will have multiple computers, means entire thing are multiple. So you have different inputs and outputs. So you are working at the same time, you are working on different tasks because input bhi alag hai, output bhi alag hai. Okay, so that is why you do not have a shared memory concept, क्योंकि input अलग है, output अलग है. In distributed system आपके बहुत सारे process होंगे, but input और output same होगा because you are working on the same task. Parallelly में you are working actually parallel. तो इसीलिए distributed system में हमें लगता है कि at one instant हमारे बहुत सारे task हो रहे हैं, but नहीं, एक instant पे एक ही task हो रहा है, लेकिन वो इतना fast हो रहा है कि हमें लगता है कि वो parallelly हो रहा है. But why then we require distributed system? Because उसमें load sharing हो जाती है ना, एक के ऊपर load नहीं आता है. But parallelly is totally actually parallel systems. तो आगे जाके जब आप DBMS subject पढ़ोगे, concurrent transactions पढ़ोगे, so concurrent transactions are basically your distributed system, whereas parallel computing is more like a simultaneous operations. Simultaneous operations में one instant पे दो ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन पे वन इंस्टेंट पे एक ही ट्रांजैक्शन होगा. वो इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि वो एक साथ हो रहा है. Okay, so again, if you want to go into more detail, you just check out that video. Just you need to highlight here is that incremental model is using the distributed system approach and RAD model is using the parallel computing approach. तो यहाँ पे ये पैरेलल हो रहा है, तो ये तीनों पैरेलल हो रहे हैं. टास्क टीम 1, टीम 2, टीम 3 ये तीनों पैरेलली वर्क हो रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एक साथ हो रहा है. सो दिस इज व्हाई इसके बाद में ये खत्म होने के बाद आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, बट यस दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस. सो दीज things can be done parallelly. Okay, but this is dependent on this, तो इसका output आएगा. This is dependent on this, तो इसका output आएगा, so on. So increment model was like that, and RAD model is like this. Okay. So the phases of RAD model is business modeling. The identified flow is between the various business, data modeling, process modeling, and application generation, and the test and turnover. So these are the phases of RAD model. जबकि increment model was using multi waterfall model, and waterfall model is nothing but your SDLC, that is your requirement analysis and gatheration, analysis, design, testing, maintenance, deployment, and so on. Okay, so the phases are also different in RAD and incremental model. Of course, you can go into depth by reading here. Okay, and it is very easily explained. And most of the topics we've already discussed also in our previous recordings. So coming to the final thing, advantages, reduced development time. नाम से ही पता चल रहा है rapid application development and things are going parallelly. तो जब चीजें parallelly हो रही है तो वो fast आपको achieve करेंगी. All modules are work. If there are 4 modules, each module requires say 1 month. तो अगर वो parallelly work होगा तो एक महीने में ही चारों हो जाएंगे. बट अगर आप उसको इंक्रीमेंटली या सीक्वेंशियल मॉडल से या वाटरफॉल मॉडल से करेंगे तो 4 महीने लग जाएंगे. Okay, so we are obviously reducing to 1/4 in this case. Then increasing reusability of components, obviously. Quick initial reviews occur, obviously. Encourages customer feedback. It becomes easier. Integration from very beginning solves a lot of इंटीग्रेशन इश्यूज, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप हर मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर रहे हो. डिसएडवांटेज, डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग टीम. ओके, बिकॉज डिपेंडेंसी
है ना, depends on strong team and individual performances. Then only system that can be modelized, that can be built, obviously जो चीज parallelly हो सकती है वही चीजों को रैड मॉडल से करेंगे, जो चीज पैरेलली हो ही नहीं सकती, यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रैड मॉडल यूज नहीं हो सकता है. Requires highly skilled developers, high dependency on modeling skills, applicable to cheaper projects as cost of modeling and automated code generation is high. Obviously पूरा बिजनेस मॉडलिंग है, उसमें प्रोसेस मॉडलिंग है, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए तो आपको टीम भी ज्यादा लगेगी. अगर आपके 4 मॉड्यूल्स हैं और हर टीम में 4 लोग लग रहे हैं तो आपको 16 लोग लगेंगे, 16 पीपल. बट इफ यू इंटीग्रेट इनटू ओनली वाटरफॉल मॉडल तो आपको सिर्फ 4 ही लोग लगेंगे, मे बी 6-7 मैक्सिमम. ओके, बट यहाँ पे आपको 16 लोग लगेंगे. सो मैन पावर ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग, राइट. Now last but not the least, but very important, when to use RAD model. So you can read this out. I'll give you 1 minute. Okay, so it clearly states कि when you want something, some process, some project to be done fast in 2-3 months, मॉडलाइजेशन जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप रैड यूज कीजिए. ओके, और जहाँ पे there is a high availability need of designers for modeling and even the budget you can afford, then you can use RAD. Okay, so now coming to the next, that is spiral. So spiral model is similar to the increment model. Okay, that means it is also a software model with more emphasis placed on risk analysis. So increment maybe risk analysis was too high. The spiral model has 4 stages. Four phases, that is planning, risk analysis, engineering, and evaluation. Okay, PREA, you can remember, PREA, planning, risk analysis, engineering, and evaluation. Basically spiral model वहीं पे यूज होगा जहाँ पे रिस्क है ना, you need to जहाँ पे रिस्क पे काफी emphasis है, तो spiral model is used. Basically spiral model research oriented projects के लिए बहुत काम आता है, बिकॉज स्पाइरल है और रिसर्च में कोई चीज करने के बाद आपको बैक ट्रैक करना ही पड़ता है. ओके, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर. सो दैट इज व्हाई स्पाइरल मींस यू नीड टू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड. बोलते हैं ना रिसर्च में एक टाइम बाद आपका गोल गोल आपका सिर दिमाग घूम जाता है, तो इसीलिए वो उसी तरीके से उस मॉडल को भी स्पाइरल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है एज अ मेटाफोर. So a software project repeatedly passes through these phases in iterations called spirals. Okay, so it is also an iterative model starting from the planning phase, and the risk acceptance. So each subsequent spiral builds the baseline spiral. It is one of the software development models. So one by one, first is your planning phase. Now see, you can see the diagram over here. Okay, so pehla phase, then outer phase, then inner phase, right? So ये आपका अंदर आप waterfall model यूज कर सकते हो. ठीक है, ये आपका नॉर्मल आप waterfall model यूज कर सकते हो, आप अंदर RAD model भी यूज कर सकते हो, but ultimately पूरा SDLC will be your planning, that is requirement analysis and gathering. Second is your risk analysis, जहाँ पे आपका risk analysis and prototyping आप यूज कर सकते हो. Engineering, जिसमें आप कोडिंग एंड टेस्टिंग यूज कर सकते हो. इवैल्यूएशन, जहाँ पे योर कस्टमर इवैल्यूएशन एंड योर प्रोजेक्ट प्रोसेस. सो दिस इज योर स्पाइरल मॉडल. So planning requirements are gathered during the planning phase, like your business requirement specification and your system requirement specification. We have already done this topic in deep. Okay, if you do not recollect, go back to the recording. So basically planning phase is about your BRS and SRS.
Risk analysis, a process is undertaken to identify risk and alternative solutions. तो रिस्क में आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे ताकि आप उसको रिस्क जितना जिसमें कम लगे. तो प्रोटोटाइप इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द रिस्क फेज. क्यों प्रोटोटाइप? क्योंकि बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद अगर रिस्क आया तो इट विल बी अ वेरी बिग डिफेक्ट. ओके, तो प्रोटोटाइप पे अगर आप टेस्टिंग करोगे तो रिस्क एनालिसिस वुड बी बेटर. व्हाट यू नीड टू हाईलाइट हियर. So if any risk is found during the risk analysis, then alternative solutions are implemented and suggested. Then next comes the engineering phase. So obviously वहाँ पे आप coding करोगे. And testing phase जहाँ पे you are going to debug it. Evaluation phase में the customer to मतलब testing और evaluation में क्या होता है? Testing is done at the customer client developer side, whereas evaluation is done on the client side. Okay, and once one spiral is complete, then you go to the next spiral with the same phases, 4 phases: planning, risk analysis, engineering, and evaluation. So, of course, as I name suggests spiral, तो एक एक फेज आपकी ये रिपीटेटिव होगी और ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट या जहाँ पे रिस्क हाई रिस्क एनालिसिस को एम्फेसिस दिया जाता है वहां पे स्पाइरल मॉडल यूज होता है. So what are the advantages? High amount of risk analysis, hence avoidance of risk is enhanced. तो of course ये मॉडल आपके रिस्क को कम करने की कोशिश करता है. गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, क्योंकि मिशन क्रिटिकल में रिस्क बहुत हाई होता है. स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, क्योंकि इसमें प्लानिंग फेज आ गया आपका, इंजीनियरिंग फेज अलग है, इवैल्यूएशन फेज अलग है, रिस्क फेज अलग है. तो इसलिए strong approval है for documentation control. Additional functionality can be added at later stage. Why? Because we are round and round and round. So we can obviously, since we are going back, when we are going back, so we can always add. There's no problem. Software is produced early in the software lifestyle cycle. क्योंकि आपके inner cycle में project तो आपका बन जाएगा. बाद में आप उसको planning, risk analysis के लिए इवैल्यूएशन के लिए यूज करोगे. डिसएडवांटेजेस कैन बी कॉस्टली, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्पाइरल फेजेस कितनी बार चलेंगे उस पर डिपेंड करेगा. क्योंकि आप फीड फॉरवर्ड टेक्निक यूज कर रहे हो तो आप कस्टमर का फीडबैक लेके उसको वापस से चेंज भी करने वाले हो, तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट आपका एक्सपैंड हो सकता है. रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स हाई स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज. ऑब्वियसली हाई रिस्क एक्सपर्ट्स लगेंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज एंड डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉल, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स इतने कॉस्टली नहीं होते, तो वहां पे इतना स्पेंड करना, हायरिंग वेरी expertise domain people would be not preferred. Last but not the least, very important, when to use the spiral model. So when costs are and risk evaluation is important. Okay, so risk नाम आई गया. For medium to high risk projects, long term project commitment है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप फीड फॉरवर्ड टेक्निक यूज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है. यूजर्स आर अनइंश्योर ऑफ देयर नीड्स. स्पाइरल इसलिए क्योंकि आपको बार बार पीछे बैक ट्रैक करके आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस गैदरिंग में भी आपकी बैक ट्रैक होगी, तो उससे आप अपने नीड्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. ओके, तो वेयर यू आर अनश्योर ऑफ द नीड्स, देन स्पाइरल मॉडल वुड बी प्रेफर्ड. नाउ रिसर्च में भी हमें पता नहीं होता है ना दैट where we are going in research, whether it is successful or unsuccessful. तो हमें requirements क्या हमें outcome भी पता नहीं होता है कि हम successful रहेंगे, तो in such cases spiral model would be preferred. Requirements are complex, तो वहाँ पे आप spiral model use कीजिए. जहाँ पे new product line है वहाँ पे spiral model use कीजिए, और जहाँ पे significant changes are expected है ना, जैसे कि research and exploration में, वहाँ पे आप spiral model use कीजिए. Okay, so this is all about the spiral model. So I hope majorly all models are covered. If any doubts, you can ask. After this session, you will be able to compare. You should take it as a homework rather. Okay, take it as a homework, and you can also write us on the WhatsApp and comment section.
that what are the differences between these models which we have studied from couple of lectures. So the process models we have studied is waterfall, prototyping, iterative, RAD, incremental, spiral. Okay, spiral is also called as evolutionary model because it's used for research oriented and high risk projects. So it is also called as evolutionary model. And the V model also we discussed. So out of these models which we discussed, can you just present yourself and submit as an assignment the comparison between all these models, the advantages, the disadvantages, where to use the applications. Okay. So after this session, you should be able to accomplish that assignment. So any doubts or you want to like to add something? Ma'am, can you please share the link in chat box again? Chat box. Okay, I'll just do it right away. Even I'll share it in the description box later. This is the same link which I had shared for waterfall model. Okay, we have already taken the lecture on waterfall model and we have discussed this entire thing in detail. So this is the same link. Okay, only thing is you need to click on the different these things which we discussed. Okay, On the ma'am. left hand side also, you can just click on SDLC and then at the bottom you will get all the models. Okay, even if you click one model, V model, at the end you will get all the models. You're right away. Okay. We will be discussing about the agile model maybe in the next lecture. Any other doubt? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, that link which you have given for the PPT and notes, na, ma'am, it is not working. We cannot download from there. You can go on Google. I'll just share you the. यहाँ पे आप जा सकते हो. आप गूगल पे लिखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे. Okay, and you can just go over here. And यहाँ से आप PDF और PPT डाउनलोड कर सकते हैं. It's as simple as that. Should I repeat? Okay, Google पे जाइए, just type सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट PPT. यहाँ पे ENGG की ये वाली जो स्लाइड है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए 1, 2, 3rd स्लाइड पे. ऑल आर एक्चुअली द सेम ओनली, लेकिन कुछ लिंक्स पे, ये वाली लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ एंटीवायरस का वो देता है. इट्स नॉट सेफ, इट इज सेइंग इट्स अ मैलिशियस साइट. सो यू कैन गो टू दिस. आई फाउंड इट सेफ एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर चैप्टर वाइज. तो जो प्रोसेस मॉडल्स है, दिस इज योर सेकंड चैप्टर. Is it clear? I think this was your question. Yes. Same problem, ma'am. Same that malicious problem. On No, that link. no. अच्छा, इसमें malicious आ रहा है आपको. Yes, तो you go to the down one then यहाँ से भी आपको मिल जाएगा. Ma'am, can you just share the link in the यहाँ chat से box? see here you can go and you can go. This you can go. Pressman. This is second chapter process models. तो आप ये वाली this is working, ma'am. This is working. You can click on this particular link. Okay. This one. Clear? All the presentations we are doing, you can just click Pressman ऐसे and you can go, you will get even कुछ PPTs जैसे agile के ऊपर है तो I will be sharing you the slideplayer.com. तो यहाँ से आप कर सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा agile software development, so we will be taking this slide share. Yes. This one. This link we will be taking when we will be discussing that topic. So it is very easily available on Google. Anything else? Yes. Yes, somebody was asking. Any doubt?
Hello? No, ma'am, there isn't any doubt. Okay, so should we continue with agile or should we take it in the next session? We can take in next session. Next session, because that is a fresh topic and needs to be covered in more detail. Okay, so we will be continuing with the agile computing in the next lecture. So thank you very Excuse me, ma'am. much. Yes, tell me. Ma'am, can you once share the whiteboard screen? Whiteboard screen. Yeah. Yes. Any doubt on this, or you want to click the picture? Ma'am, just wanted to click the picture. Thank you. Okay. So thank you very much for your patience listening. This is Dr. ayeshabutalia signing off for this process models which we discussed today: increment, RAD, spiral. Have a nice day.